Topic is basically solving quadratic equations. लिखते रहे साथ साथ सॉरी, हाँ जी लिखें बेशक लिख साथ। लें। हाँ जी, तभी तो मैंने कहा था नोटबुक्स लें। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और हम कौन सा मेथड कर रहे थे? रिमेम्बर वी डिस्कस के देयर आर 4 मेथड्स। तो वी वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया, क्वेश्चन 2 में सॉरी हमने किया फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड, and then in question number 3 we did completing the square method, and now we are doing और the third method, which is फॉर्मूला फॉर्मूला by quadratic formula. Okay, so we are going to do the third method. 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो by quadratic formula. So can you recall what was the quadratic formula? X is equal to, yeah, whichever variable is there, so that variable is equal to minus b plus एक्स minus प्लस बी एक्स माइनस x इक्वल्स टू square सी। अच्छा ये वाला minus b plus minus b square minus 4ac, or divided by 2a. This is the quadratic formula. All right. So now we are going to start with the first question. So reference बेशक दे दें, exercise 2.1, और we are going to do question number 4 and fourth part we are going to do. First 3 parts we have already done. All right. So the नहीं question मेरे is, पास रिकॉर्डिंग हो रही sorry, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग हो रही the recording save हो जाएगी class में. So I will edit it है। and I will upload it. ठीक है X plus 1 whole square is equal to 2x minus 1 whole square. So how should we start? Can you recall what should be the first step? फैक्टर नहीं फॉर्मूलाज के साथ मैच करेंगे। पहले बताना है कि भाई ए क्या है बी क्या है सी क्या है। First of all, we need to know what is A, B, and C, and for that we need to convert this equation into standard quadratic form. वो क्या होती है? वो होती है ax square plus bx plus c is equal प्लस to 0. So first of all, we need to convert this equation into the standard quadratic form. So इसके लिए हमें क्या करना होगा? We need to open the squares. So this is a plus b whole square. So what is this equal to? A square plus b square plus 2 into a into b. Are you clear now how we have expanded it? A plus b whole square. यस So yeah, here also it is 2x whole square, a square plus b square. So here it is minus 2ab. So minus 2 into 2x into 1. So x square, we will just expand it, plus 1 plus 2x. And on the right side, we are having 4x square plus 1 minus 4x. So now this plus 1 can be cancelled on both sides, because it's like taking out the same thing from both sides. So now we can rearrange it. So x square is bigger power here. So let's move all the powers to this side. So this is 4x square. This x square माइनस plus x square will come. So it will be minus x square minus 4x. And this plus 2x when it will come on this side, it will become minus 2x. And what is left here एक्स is 0 now. We are basically changing it into the standard form. So on one side of the equation, there should be a 0. So now we can say 4x square minus x square, it is 3x square, and minus 4 minus 2 minus 6x is equal to 0.
So now you can take 3 as a common. 3x as a common भी ले सकते हैं. So it will be x minus minus 2. 4 2. So the two values are either this 3x is equal to 0. Oh, sorry, but we need to. Sorry. I No, no, cannot. I have solved it through factorization method. No. I will keep it as a quadratic form. So I can take 3 common. So it will be x square minus 2x. So this 3, when it will go on the other side of the equation, it will be 0 by 3. So that is not making any difference. So the equation in the standard form is x square minus 2x is equal to 0. Are you getting this? What I have done yes. earlier, मैंने इसको factorize कर दिया था. So I can still solve it by factorization, but the question says that you need to apply quadratic formula. So now I will apply quadratic formula. First of all, can you tell me, is this in the standard quadratic form? No, मैम सी नहीं है इसमें. इसमें C नहीं है, तो it is not standard form. It is in the uh, because C is missing. C can be 0, that's fine. So now what is A? What is A in this quadratic equation? X square. X square is A. Tala, you're doing the same mistake again. So A should be the coefficient ना. यहाँ देखें, A is the coefficient. So what is the coefficient of x square? It is 1. So B is हाँ. coefficient of x. So B is minus 2. C is coefficient, the constant value which is not here. So C is 0. 0. So now I can apply quadratic formula. I can say x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So just 2. simply uh, put the values minus b is minus 2 to keep them in the bracket. So brackets are mandatory here. B square is minus minus 2 2 square minus 4 into 1 into 0 divided by divided by 2. 2 into 2 minus 1. minus 1. All right. So now minus into minus 2 is 2 plus minus. So what is minus 2 whole square? Minus 2 4. whole square. It is 4. And what will be this value? 4 into 1 4. into 0. 4. No, it is 0. Because when 0 4. is multiplied with any number, so it will be 0. Divided by 2. 2. So now we are having only 4 in this root divided by 2. So x is, what is square root of 4? So it's basically 2 plus 2. minus 2 by 2. So because it's a quadratic equation, so we are expecting two values. So one time you will put positive value and other time you will put Negative. negative value. So if you put positive, if you are looking for this answer, it is 2. And if you are looking at this answer, it is 0 by 2, which is 0. Right? So solution set is 0 and 2. All right? Verify भी कर. Verify भी कर लेते हैं. So we can verify through calculator also, or we can just simply put the value on in the question. So just let me scroll up to the question. ये question है. So if you need to verify, let's do it here. If you verify it,
You got two values, x0 and x2. So if you put, let me write down the question. This is the question. x की जगह बस वैल्यू लगा देनी. हाँ, x की जगह. If x is 0, so ये 0 हो जाएगा, तो 1 square is equal to 2 into 0 माइनस minus 1 का whole square. So 1 square is 1. So यहाँ से भी we need to get 1. 2 into 0 is 0. So ये minus 1 का square है. And minus 1 का square भी 1 ही होता है. So it's verified. So let me use the other value, Other value is 2. So if I put 2 in the question, x is 2 plus 1 whole square. और यहाँ से अगर देखें तो 2 into 2 minus 1 का whole square. अब देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड से इट्स 9 3 square. 9 आ तो जाएगा. 9 आ हाँ जाता है. 3 और यहाँ से देखें तो इट्स 4 minus 1 whole 3 square. So 9. 3 square क्या आएगा? ये भी 9 ही आ जाता है. Because the answer is real value, na? So we can easily check it. So are you done? यस कर लिए. 1 मिनट. All right. Okay, sure. कर ली. Okay. All right. So let's move on to next question. Question number 5. So question number 5 is x plus 1 by 2 minus x into x plus 1 x +2. into x plus 2 by 3 is equal to 0. So what is the first thing we need to do? What is the first thing we need to do? We need to change स्टैंडर्ड it फॉर्म. into standard स्टैंडर्ड फॉर्म. quadratic. Very good. So we need to change it into standard form so that we can get the value of a, b, and c. So there are fractions in the question. Tala, how to get rid of fractions in an equation? मल्टीप्लाई बाय Multiply with 6. LCM, which is 6. 6. Very good. So let me just, change the color and let me do it here. Just let me write down. I'm multiplying this with 6 both sides. So when this, and this is also definitely multiplied with 6, but that will also become 0. So if I'm multiplying this with 6, so this is 3 basically cancelled. So 3 is left. और यहाँ से 2 is left. और यहाँ से this is 0. So now I can write down the leftover 3 things. 3 into x plus 1 minus, so now what will this be? X was already outside, so this 2 will also come. बिल्कुल सही. 2x into x plus 2. Or 0 multiplied by 6 is 0. So that will not be making any difference. So now we will just expand it. So how to expand? 3x plus 3x plus 3 3x plus 3 minus माइनस 3x. 2x नहीं. square. 2x into x would be 2x into x would be 2x square, 2 or this sign will be changed to minus 2 2s are 4x. Are you clear? ये कैसे आया? plus Alright. So now we will just rearrange it. We will write down x square first,
Then minus 4x plus 3x. It is minus x plus 3 is equal to 0. So now whenever there is a negative sign in the front, so you can take negative sign common or you can use the same values. It does not make any difference. What is A? -2. Minus 2. Very good. What is B? 1. -1. Minus. And C is 3. +3. Right? So now we will write down the formula because x is here. So we will write down x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. All right. So now just put the values minus into minus 1. Use brackets so that you are easily familiar with the sign later on. B square, so it will be minus 1 whole square minus 4 into a minus 2 and c is 3. So divided by 2 into minus 2. So now just simply open the brackets. Minus into minus plus 1 plus minus 1 square would be 1. 1. Now this minus into minus sign will become plus sign and 3 twos are 6, 6 fours are 24. 20, 24. 24. Very good. So in the 4. divisor it is minus 4. So now if we 5 आ जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही है. This is 1 plus minus. So can I write directly 5 divided by minus 4. 4. So now we are having two value because it's a quadratic equation. So x will be having two values. So one time you will use plus value 1 plus 5 by 4 or x is equal to 1 minus 5 by 4. What is the value And coming we from have this to side? change sign of -4. Sorry? Sorry? We have to change signs of -4. Gee, there is a minus 4. That's right. So this is 6 by, so minus 6 by 4. So we will get this answer minus 3 by 2. From this side, we are having minus 4 by minus 4. So what will be minus 4 by minus 4? It will be 1. Got it now? So the solution set is minus 3 by 2 and 1. So should we verify also? कर लिए 0 आ गए. Very nice. Calculator say? जी. Okay, that's great. All right. So these are the answers we got. So are you done, Tala? Done. Okay. So let's do the last. So the last part of this question is question part 6. So sixth part is x minus 2 into x minus 6 is equal to 2x plus 1 into x plus 1. All right. So first step is that we need to change this equation into standard quadratic form. So how should I solve that? What to do? फॉर्मूला भी लग सकता है. Formula नहीं लग नहीं, सकता मल्टीप्लाई बाय because 2. हाँ मल्टीप्लाई we need to multiply them simply because they are not there is no formula we can use. So x will be multiplied मल्टीप्लाई with x minus 3. 6 and then minus 2 will be multiplied with x minus 6. 6. On this side also 2x will be multiplied with x plus 1 and then
plus 1 will be multiplied with x plus 1. So now we need to open the bracket. What is x into x? X square. X square minus 6x. So minus 2x and plus 12 is equal to, so we need to open these brackets also, 2x square plus 2x plus x plus 1. So x square minus 8x plus 12 on the left side, and on the right side it is 2x square plus 3x plus 1. So in the standard form, so this is one quadratic equation and this is another quadratic equation, but we need to put them in the standard form. So I need only one term of x square. So I need to combine them. So I will take everything here, let's say minus 2x square minus 8x minus 3x plus 12 minus 1 is equal to 0. So what we have done in this step, we have taken all the three terms on this side of the equation. All right. So now x square minus 2x square is minus x square. Uh, So minus 8 minus 3 is minus 11x and plus 11 is equal to 0. So in the last question, we have not taken minus common, but let's take minus common here. So I can take minus 1 common just to make the first term positive. All right. So 11x, it will not change anything, just to show you that now there is no difference. So a is equal to 1, b is equal to 11, and c is equal to minus 11. minus So now x is equal to quadratic formula minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. So just put the values minus b, so minus 11 plus minus b square is 11 square minus 4 into 1 into minus 11, 4ac divided by 2 into 1. जी बेटे उसने कुछ चला जी okay. So now we will just solve it. X is equal to, are you with me और मैंने scroll down कर दिया, आप ऊपर तो नहीं है? नहीं मैं नीचे ही हूँ Okay. So minus 11 लेकिन plus minus 11 square is 121. This 120 minus, हाँ जी, minus into minus is plus or 44 you get divided by 2. So the values are minus 11 plus minus, what is 121 plus 44? 165 divided by 2. रूट नहीं है Sorry? यह रूट नहीं है इसका हाँ जी, it's not a perfect square. So I told you that the answers or the solution can be either real numbers or sorry, either rational numbers or irrational, or it can be complex number as well. हमने कुछ questions किए जिनमें complex answers आते हैं. All right. So what are the two values of x? These are the two values of x. One times it will be plus and one time it will be minus. So we will combine them as a solution set. All right. So what kind of answer is this, Tala? So x is having ,
X is having irrational values. All right. So you can verify through calculator. That would be easy. Ji Talha, are you done? जीरो आ गए. Ji, very good. So it's verified also. Excellent. So moving on to next question, because this is done. So next question is this quadratic equation using graphic method and factorization method. So we will solve through graphic method, and then we will recheck it through factorization method. So first is that we are going to solve through graphic method. All right. So I will use a software to draw this graph. And what you need to do is that you can draw the graph later on a graph paper. So the equation is x squared plus 6x is equal to minus 9. All right. So I'm just using a graphic tool. I have already opened it. All right. This is called, it's an online website. It's Desmos. All right. So I will be using this tool to draw it. And when I will draw it, I will get the answers also. All right. So I'm writing question here. Question is x square plus 6x. Can you see खुद ही बन how रहे I'm हैं. writing the equation? Is equal to minus 9. 9. So this is the एमी खुद. equation. So just look at the graph. Oh, sorry, Tala, what you are saying? ये रेड लाइन क्या है? ये graph बनेगा ना? The graph of quadratic equation is not a straight line. Actually, na, the graph of a straight line is a parabola. Let me show you on this page. Usually, graph of a quadratic equation is like this. This is called a parabola, right? Because if this is the x, na, so it is basically cutting the axis at 2 point. Are you getting this? Because x is having two answers. Are you getting this? It should cut the x-axis at 2 points. But this answer of this equation is a straight line. So how was the graph? Graph was like this. Instead of getting this graph, we got a graph like this. ऐसे ही है ना? So what is the answer then? What is the solution point? If we are going to solve it through a graphic method, so what is the answer or what is the solution of this equation? So solution is wherever this line, red line which you can see, is crossing x-axis, that is the solution. So this is solution basically, this point. Can you see? What is the solution? -3, Minus 3 is the solution. Why is not important? Because we are only talking about 1. So minus 3 is the solution. So this equation is giving me solution minus 3 through graphic method. How? We have used this software and we have checked that this is the answer. All right. I will share this graph in the class group also. So this minus 3 is your
answer by using this. So in the next question, again, we will draw the graph and then you will see there would be a parabola. So now let's go back. So from the graphical method, I got this answer that x is equal to -3. X is having just one value. So now let's confirm it through factorization method because they told us to do factorization method also. So let's factorize it. So this is the equation x squared plus 6x is equal to -9. If I take this 9 on this side, so now we are going to do factorization method. So can you tell me how to factorize it? Ji? Middle term breaking. How middle term breaking we can use, or I can see, chalo, let's do middle term breaking. So this is x square plus, so we need to split 3, so it is 3x plus 3x plus 9 is equal to 0. So if I take common, so x will be common and it is x plus 3 plus 3 is common and x plus 3. So what are the two factors? X plus 3x plus So both are the same factors. That's why we are getting only one line. So multiply x is होगा. only x plus 3 is equal to 0 and x is equal to -3. So the solution set is -3. All right. Is it clear? Yes. मैम ये ग्राफ That's कैसे great. बनाना है? ये बेटे कॉपी पे. ग्राफ आप पता है कॉपी पे कैसे बनाएंगे? You will draw it like this. So this is your axis. On x-axis in this quadrant -3 पे you will draw a line. Go ahead, graph the function y equal to x square plus 2x plus 4 and verify solution by completing the square method. So first of all, let's do the square method. Completing the square method. So let's find the answer and then we will draw the graph. So the quadratic equation is x square plus 2x plus 4 is equal to 0. So how to use completing the square method? This is your first square x square plus 2 into x into क्या होगा 1 plus 1 square. So it's -4 plus 1 square. This is x plus 1 whole square. This is -3. So what kind of answer is coming? Sorry, let me. Okay. So how to solve further, Tala? How to solve further? स्केयर खत्म करना है. बिल्कुल सही. So we will take square from both. Square root on both sides. ऐसा ही है. So we will write जी. down x plus 1 whole square
is equal to -3 square root. So this is x plus 1 और ये क्या है -3 का स्क्वायर रूट. व्हेन देयर इज अ नेगेटिव साइन इन द रूट तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? आयो वो +1 आयोटा से. मल्टीप्लाई बाय हाँ जी बिल्कुल. तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा. सही है ना? वही सारे स्टेप्स फॉलो कर. तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी और यहाँ पर प्लस माइनस आएगा बिकॉज इट्स द रूट. तो मेरे पास वैल्यू आती है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा. ये मेरे पास सोल्यूशन सेट भी है. यही सोल्यूशन सेट है इसका. ठीक है. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स आंसर. So now I am using the graphic method. It's very difficult to draw. On the other hand, we cannot draw it. जो quadratic equations है उनको draw करना is challenging. So graphic method के लिए I will be using that software again. So just to show you कि how this will look like. So I am changing the function value. So this time the equation is, what's the equation? Let me just check again. It was x square plus 2x plus 4. X square स्क्वायर प्लस plus प्लस 2x, sorry, plus पॉइंट 2x plus 2x plus 4 4. ये आपके पास इक्वेशन है. अब आप देखें इसका ग्राफ कैसा है. जी पैराबोला है ना? ठीक है. दिस इज द ग्राफ. ओके. और देखें द आंसर इज ये बिकॉज दिस इज अ रियल प्लेन ना, इसमें कॉम्प्लेक्स आंसर्स नहीं आ सकते. तो आप देख रहे हैं जो इसका आंसर पता है क्या होता है ग्राफिक मेथड में? वेर एवर दिस ग्राफ इज टचिंग, जो रेड लाइन है जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच करेगी, दैट इज योर आंसर. तो इज इट इवन टचिंग द एक्स एक्सिस? इज इट? नहीं कर रही नहीं करी ना, बिकॉज इट्स अ रियल प्लेन. अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होती तो फिर ये टच करती. अब ये रियल प्लेन है तो इसमें ये आंसर के एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करी, क्योंकि इसका आंसर रियल नहीं है ना. इसका आंसर हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. अब देखो इन दोनों क्वेश्चन से जो हमें उन्होंने एक्सरसाइज में दिए हैं, हमें एक अच्छा आइडिया नहीं हुआ. सो एक दफा ना, लेट मी वेरीफाई. आपको याद है जो हमने क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट किया है? ठीक है, मैं उसको ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि उसका ग्राफ, क्योंकि उसका हमें आंसर पता है ना. ठीक है. सो लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ, जस्ट राइट डाउन दैट. वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? 4, सॉरी. x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू टू एक्स एक्स माइनस 1 माइनस वन का होल. का होल ये ग्राफ था हमारे पास, है ना? अब देखो इसके आंसर देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके दो आंसर हैं ना. सॉरी, लेट मी जूम इन, क्योंकि मैंने इसको जूम आउट किया हुआ. अब इसके दो आंसर हमारे पास क्या थे? एक था एक था 0, कॉपी बंद कर एक था 0 और एक था माइनस नहीं एक था 2, है ना? एक में कॉपी बंद 0 कर ली एक था 0 2 और एक था 2 था ना. अब देखो आपको ग्राफ में नजर आ रही है जो रेड लाइन है, ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करी है. एक पॉइंट पे एक्स 0 है, आपको नजर आया और 0 एक 0 लिखा हुआ. और एक और पॉइंट एक पे पे एक्स क्या है?
2 दूसरे पे x क्या है, 2 है। 2 सो यही दो इसके सोल्यूशन है। समझ आ रही? जो ग्राफिक सोल्यूशन होता है ना, वो चाहे आप सॉफ्टवेयर से करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ये पेपर में आएगा, ये इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि ये आपसे आप वैसे नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अब हम जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक दफा ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें कुछ बेहतर आइडिया हो। उसका थोड़ा सा सोल्यूशन बेहतर था। अब जैसे वो था हमारे पास x+1 बाय क्या था, x+1/2 x+1/2। माइनस इसका होल डिवाइड कैसे करेगा, नहीं, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, x+1, नहीं नहीं, तो इसमें दिया वही नहीं नहीं ये इसमें कैलकुलेट। ना इस तरह करना पड़ेगा। x+1 को ब्रैकेट में लिखेंगे तो जब डिवाइड करेंगे ना, तो आप पूरे से डिवाइड हो जाएगा। x+1/2, समझ आ रही है ना, आपको नजर आ रहा होगा ना? जी। ठीक है। और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, माइनस एक्स x इंटू एक्स, और x आगे प्लस ब्रैकेट में एक्स x प्लस प्लस 2/3 x+2/3। इसको पूरा करना है। हाँ ये फुल हो गया ना, इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास ग्राफ था। अब देखिए इसके इसके आंसर भी हमें पहले से पता है। अब देखो इसके 1 और आंसर माइनस क्या, अब ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एक्स क्या आ रहा है, ये देखिए एक्स 1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 और यहाँ थ्री पर बाई देखें टू एक्स क्या, माइनस ये थ्री गलत बाई है। टू 3/2 इज -1.5 ना, सही है ना? अच्छा ठीक समझ आ गई? ये चीज समझ जी। आ रही है ना? ठीक है, ये आपके आइडिया के लिए, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड। तो ये आप अगर इजी। ग्राफ ना भी ड्रॉ, हाँ ये मतलब ये अब आजकल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। ठीक है। सो question 7 and 8 are basically theory type questions. So in question number 7 we will finish after question 8. ठीक है ना तला? Question number 7 is very simple. We will just discuss it here. Question 7 is that explain each term. So first and second जो terms है ना, they are related. Let me tell you just quickly. एक term है हमारे पास solution, और एक term है हमारे पास roots. They said कि define this term. So what is a solution, Tala? हम बताना है कि क्या क्या बताना है हाँ, इसमें। they are saying कि explain each term. So I have written the first प्रोडक्ट two terms together because इन दोनों जो का हम मतलब सेम है ना। हाँ जी, solution प्रोडक्ट is निकालते हैं। जो हम आंसर निकालते हैं, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अब देखो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ऐसे ही है ना, जैसे x की वैल्यू आती है 2, तो हम उस 2 को इक्वेशन में पुट करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है, इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है। सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इसको क्या कहते हैं? इसको दोनों कहते हैं। हम इसको सोल्यूशन भी कहते हैं और इसी को हम रूट्स भी कहते हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, उस इक्वेशन के आंसर्स। तो ये दोनों टर्म्स बेसिकली एक ही जैसी टर्म्स हैं। फिर उन्होंने हमें एक तीसरी टर्म कही है, जीरो ऑफ अ फंक्शन, जीरो ऑफ अ फंक्शन। और एक चौथी टर्म है, वो भी मैं अभी लिखती हूँ। जीरो ऑफ अ फंक्शन जो टर्म है ना, दिस इज कमिंग फ्रॉम ग्राफिक सोल्यूशन। ठीक है। सो ग्राफिक सोल्यूशन में जीरो ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? जीरो ऑफ अ फंक्शन ये होता है कि व्हेन योर ग्राफ इज बेसिकली क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस, जो हमारा आंसर है
तो उसको वो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। ठीक है, सो इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो इट्स रिटन ऑन पेज, लेट्स से पेज नंबर, लेट मी टेल यू, जहाँ पे ग्राफिक सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चन हुए हैं ना, देयर इट इज, आई एम टेलिंग यू द पेज नंबर, यू कैन ओपन दैट पेज टू सी द, ये इट्स पेज नंबर 27, पेज 27 ऑफ 28 ऑफ योर बुक, 28 नहीं 29, पेज 29 पे देखें, इट्स रिटन के द, कहाँ लिखा हुआ है, पेज 29 पे तला, कैन यू सी दैट, पेज 29 पे लिखा हुआ है कि द इंटरसेप्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड, द इंटरसेप्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड जीरो ऑफ अ फंक्शन। क्या होता है, इंटरसेप्ट पॉइंट्स, इंटरसेप्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड जीरो ऑफ अ फंक्शन। देखो जैसे अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, तो वो जहां जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, जीरो ऑफ अ फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, लास्ट आपके पास जो टर्म है ना वो है इंटरसेप्ट। अब ये दोनों टर्म्स रिलेटेड है। इंटरसेप्ट क्या होता है, हमने 9 में भी पढ़ा था, आपको याद है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो होता है जब एक्सिस को कोई लाइन क्रॉस करती है। देखो अगर ये एक लाइन है फॉर एग्जांपल, अब ये लाइन दो जगह पे एक्सिस को क्रॉस करी है, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर, समझ आ रही। अब यहाँ पर जब क्रॉस करी है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है लेकिन वाई जीरो है, तो इस पॉइंट को आप कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे लाइन एक्सिस को कट करती है, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये बात समझ आ रही। आपकी जो चार डेफिनेशंस लिखी हुई है ना, उनमें पहली दोनों डेफिनेशंस आर रिलेटेड, बिकॉज उनका एक ही मतलब है। और अगर देखा जाए तो जीरो ऑफ अ फंक्शन और इंटरसेप्ट दोनों रिलेटेड है, क्योंकि इंटरसेप्ट पॉइंट्स जो हैं वो कहलाते हैं जीरो ऑफ अ फंक्शन। और इंटरसेप्ट क्या होता है, जब कोई लाइन एक्सिस को क्रॉस करती है तो हम कहते हैं कि ये इंटरसेप्ट की है। ठीक है, तो एक अगला जो क्वेश्चन है ना वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बस वो डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट दो क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन टू सॉल्यूशंस, सो व्हाट डू यू थिंक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन से ज्यादा हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम्म, होते क्वाड्रेटिक हैं, इक्वेशन है फॉर एग्जांपल एक्स हो स्क्वायर सकते हैं, प्लस 3x हो सकते हैं माइनस मैम। 9, नहीं हो सकते। मैम ठीक है, वो अगर किसी भी साइन क्वाड, प्लस माइनस है तो फिर एक बेटे प्लस आ सकता है और क्वाड्रेटिक एक माइनस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ तो वो दो ही होंगे ना, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, दो से ज्यादा क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू आंसर्स। ठीक है, क्यों नहीं नहीं हो हो सकते, अब उसकी रीजन क्या है, और जो एक्स की पावर क्योंकि होती है ना, जो एक्स की सबसे बड़ी पावर होती है, उतने मैक्सिमम आंसर्स हो सकते हैं। समझ आ रही है? ये बात क्लियर है ना।
as maximum power of variable is 2। तो दो से ज्यादा इसके सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये याद रखना है। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है तला। सो बेटे दैट्स ऑल। ठीक है, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो।